साला वाज मिसिंग, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, देख दालोद को हम गाली देते हैं चलेगा, लाइक बहुत मराता है, बहुत मिस पास करता है, लाइक ही वाज आउट ऑफ पोजीशन सो मेनी फकिंग टाइम, बट आई पर्सनली थिंक when it came to Salah, देख Salah is not in form anyways, लेकिन he sort of kept him quiet, क्योंकि उसको कुछ आने नहीं दे रहा था, कुछ करने नहीं दे रहा था, he had to come back, he had to give the ball away, at least वो उसने किया, तो हम लाइक ठीक है, क्योंकि Salah has been out of form for a while, ये यूनाइटेड के सामने हमेशा वो गोल मारता ही है, हमेशा ही दैट कम्स, मारता है भाई। exactly, like actually goal is an understatement, like he goes on god mode, उसको चुप रखा भाई, उसको कुछ करने नहीं दिया, and it's उस not even about उस scoring, it's about him making plays or doing क्रिएटिंग anything, चांसेस, कुछ भी नहीं, and that there again was comes no to the whole contribution. team. हाँ एग्जैक्टली, ही वाज देयर वाज नोवेयर, क्या सही बोला उसने, क्या 3 बार नाम आया उसका पूरे इसमें, लाइक गैक्को हैड अ बेटर हाँ, फकिंग गेम, ही आई वाज मोर स्कैर्ड ऑफ गैक्पो हिम, हैड द बेस्ट गेम, आई वाज गैक्पो हैड द मोर बेस्ट स्कैर्ड गेम। ऑफ हिम विद दोस Not only, शॉट्स. not only, not only for Liverpool, Gakpo was I think the best player on the pitch. The way he was running, direct shots, दो उसका पोल पे लग के गया। एंड ही But मिस्ड if you're talking 80th about मिनट पे, any miss, एक वो गंदा सा header, this was sitter, he should have scored. ही शुड But हैव now स्कोर्ड we're talking about the best player on the pitch. I think Cunha. फॉर मी. That Brazilian bastard. ही पहला आदमी जो यूनाइटेड के लिए, मतलब एंटनी भी ब्राजील का था, मैं कुछ गलत नहीं बोलेगा, चला गया, बट ये एक्चुअल ब्राजीलियन, उसके पास सिर्फ ब्राजील का पासपोर्ट था, वो मुझे लगता है इधर उधर किधर से तो इसका आया इसका स्टैम्प मैम सब है. है। इसका सी इसका माँ बाप भी ब्राजील का है, कोई मिलावट नहीं है, प्योर ब्लड है, ये मगल नहीं है, ये प्योर ब्लड है, ये देख हम वोल्डेमॉर्ट के खानदान है। लोग हम लोग इसी के बारे में बात कर रहा था ना, लाइक कितने बार मैंने बोला होगा कि लाइक कुनिया हैज बीन और इज आवर बेस्ट साइनिंग एंड इट विल शो, क्योंकि कुनिया में तो को यही बोला था ना सिटी के लिए, दैट्स व्हाई आई वांटेड हिम, क्योंकि ये वो प्रॉपर हरामी प्लेयर है. वी वर मिसिंग लाइक सच अ काइंड ऑफ प्लेयर सिंस एजेस. कैरेक्टर, हाँ, और पर्सनालिटी चाहिए होनी चाहिए क्योंकि पूरे टीम। एम्बूमो ब्रूनो रंडी रोना करेगा, एम्बूमो बहुत अच्छा इंसान है, सेस्को इज स्टिल अ किड, हरामी प्लेयर कोई नहीं है, हरामी प्लेयर ये है, कैसेमीरो हरामीगिरी करने आता तो सीधा काट लेता है. हाँ, दूसरा हरामी प्लेयर है जो बहुत साल से खेला नहीं है, लिसांड्रो मार्टिनेज, ये दोनों Exactly. कितनी हरामीगिरी And होगी, तो ये सच। see, you need such characters, and he showed, like, क्योंकि वो जिस हिसाब से बॉल ले रहा था, especially that second half after the later stage, like during the later stages, he's keeping the ball, he's not passing, वो 3-4 जन के को काट रहा है, काट भी नहीं रहा है, उनके सामने खड़ा है कि if you want the ball, the way he's putting his body, कि गिरा। तुम उसको मारो या फाउल करो, वो बॉल नहीं दे रहा है, and he's not even leaving, best part, वो बॉल दे भी नहीं रहा है, वो रख रहा है, बोला तुम मेरे पे चढ़ो, 2 प्लेयर चढ़ रहे हैं, and he wasted so much time. कितना हरामीगिरी किया, and like the pressing, the fouls, like these things matter, and the best part, it got highlighted, everyone saw it, and I wanted it, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, यूनाइटेड फैंस देख रहे हैं, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वही चालू है ना अभी गोल नहीं XG मारा। क्राउड, हाँ, कि लाइक गोल्स नहीं है, असिस्ट नहीं है, अभी पीपल. एक सेकंड, लोगो, एक सेकंड, Mario, I want to understand what the fuck is this XG. I understand the fundamentals, but XG, मेरा XG 10 हो दे, लेकिन मैं प्रीमियर लीग में 10th on table, does it matter? No. For everyone who watches the video, me and Lobo are not technical enough to XG, मतलब लोगो होगा क्योंकि वो पावर है, क्योंकि पावर, but you are our analyst. तू बता XG हाई होने से क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, ये सब स्टैट्स वाले चीजें ना, दे आर ट्राइंग टू प्ले दिस मनी बॉल वाला सिनारियो, नहीं चलता है. मन It's as simple. A goal that are is you scored is a goal that is scored. are तेरे you को पता saying है अगर ये Arteta XG is का wrong? stat है, Arsenal were better than PSG. XG says that. Arteta said that. बेचारा है भी नहीं कोई आर्सेनल का इसलिए ना, प्लेयर, इसलिए उसके पास मन में 2 टाइटल है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं. मन में चलो वो बेचारे खुश है कि हमने मारा और ये उसकी बजा रहा है, ये अलग से इसका बनाना. हाँ. तेरे को पता है अगर ये XG स्टैट्स नहीं होता ना तो कल AWS क्रैश नहीं हुआ होता. अपन करते कल ये वीडियो, ये फुटबॉल के बजाय ये बकचोदी ज्यादा हो गई, वी हैव सो मच XG, आर्नी स्लॉट के आर चालू हो गए भाई. ओ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ओनली अ लॉन्ग बॉल प्लेइंग टीम. तेरे को पता था ना, तो क्यों नहीं सेट किया अपना टीम? तेरे पास भाई कोनाटे उसने है, तेरे पास वैन डाइक है, लंबा 2 आदमी लोग हैं,
fine, you knew, right? Man United is going to play long ball. We are only one dimensional team. Fuck it, मान लिया. We are only one dimensional team. हमको 3D के कुछ नहीं करना. हम विजय शंकर नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम के. हम लोग लॉन्ग बॉल खेला. तूने क्यों नहीं डिफेंड किया? बोलता क्या है? और दूसरा क्या बोलता है? Every Sesko. game Shesko plays. We were Bro. Shesko. Does he know that a manager can change a lineup and he doesn't have to tell him? और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? अभी लाइक टीम लीक करने के लिए गर्नाचो भी नहीं है. तो टेक्ले को पता ही नहीं है. But what a stupid statement, right? Like you don't know that a manager can fucking change his players. Like he reminded me of me telling to my mom after not scoring good, मम्मी मैं 60 मार्क्स से पढ़ के गया था, वो बाकी 40 का डाल दिया. तो मैं क्या करेगा? तो मैं क्या, मेरी गलती थोड़ी है. इसको मेरी गलती है. वो उसने वो आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया. मैं तो excuse तो अच्छा दे. Contact Arteta, right? Like at least give good excuses. Like what the fuck was this? And you know what? The best part, Amorim comes in. He says like, क्योंकि Van Dijk और ये Konate ना, I think they both are good in air, and that's why he didn't want Sesko because he thought like and he was right. Like नहीं खिलाया Sesko को, it turned out well. कुनिया को आगे डाला, माउंट यहाँ से प्रेसिंग कर रहा है, कुनिया हरामीगिरी कर रहा है. एम्बुमो को तो छोड़ देते हैं इन लोग. वो ऐसे लगता है कि देख एक पूरा यूनाइटेड एक तरफ और वो उसका अलग दुनिया है. Like right में ना, like and So, I don't know. I'll just remind you guys before you go ahead. If you remember, obviously you'll remember. इतने सालों में we always had a problem at right. हमने जितने प्लेयर राइट के लिए साइन किया है, सबको लेफ्ट में खेलना था. सांचो लेके we can go on and on. And now we got a player in the right who's causing all the fucking trouble from right. Imagine that. What were the odds? Mario was saying something. I know. no, so it's a very funny, right, that Mbeumo has so much space, but Yes. Mbeumo never says, or you'll see, right, he comes back. It's not like Mbeumo वहाँ पे घर बना के बैठा है. He comes back, he does everything that's required to help out with the right, With and the right still side. when you need him, right, he's there open over there. He's there. He's there. I'll tell you what. जैसे अभी डुएन ने बहुत अच्छा पॉइंट लिया, राइट? यूनाइटेड का 10 प्लेयर अपना खेल रहे हैं, डुएन वाले खेल रहे हैं. एम्बुएमो को देख के ना मेरे को दर्शील सफारी का याद आता है. वो अपनी ही दुनिया में कुछ तो क्रिएटिव कर रहा है. यूनाइटेड उधर भाग रहा है, और एम्बुएमो यहाँ अलग अंदाज है, वो अपना बॉल लेके जा रहा है, अकेला खेल रहा है. वो रमात अपना उधर फुगड़ी कर रहा है टीम के साथ. इधर Right? बॉल. So it's not me alone, right? No, तुम लोग ने नोटिस किया ना. But But that's that's Mbeumo, right? That's the beauty of Mbeumo. And yet he's so grounded. Sorry, Mani. the good part is, right, so we spoke about Ahmad, we spoke about Mbeumo, but the third piece in that wheel, right, is Delit. Delit is fitting so well in that place, right? He's coming up when required. All three of them He's putting are in those doing tackles. very well together. Yeah. And although Gakpo had like a great game, right? You can't catch any one of them and say that, you know what, it was like even the goal went from the right hand side, but you can't catch any one of them. You know, the goal went at the time when Dorgu went to the right. Dorgo had a shit game. Dorgu, And and was having shit a lot, but it's and Nee, that but- is one sad part from the preseason, right? I think preseason Dorgu and Cunha were linking up really well, and That's Dorgu just had such sort a of bad season after it started. it faded, right? Like actually, that's a very good point. कि Like it just sort of, क्योंकि I think like just because Mbeumo पहला तो like that the Mario, the point you made, that was perfect. I think we need to talk about him. Like I think we've not spoken, and he's been sort of consistent for a while. Like थोड़ा सा I think we missed it as well with Martinez, जैसे तूने बोला अब है नहीं थोड़ा, क्योंकि देख Amorim has been changing his CVs a lot. backline almost every game. Yeah. Exactly. तो वो एस्पेक्ट में थोड़ा सा I think personally like I would want to see a little stability because Euro has been good as well. Like even when he came yesterday, he's been good. And now I think now again coming to the same point, just because we got a goalkeeper who can fucking save, I think it shows in their Bare face. Right? minimum. Bare minimum. Bare Save minimum. भी नहीं. He's not made any brilliant saves like De Gea or हाँ. Schmeichel or उसके पहले. But he's doing what we've missed for last 3 years.
I mean, Onana and the other guy, what is Bhainder Binder. Nehru should eat his shit every day in breakfast, lunch and dinner. और हाई टी में भी उसके ही टट्टे चाटे. Dude, that guy is doing bare minimum और हमारे लिए सनी लेमंस भगवान बन चुका है. मैं मूर्ति लगा रहा दिवाली में और वो पूजा क्या किया कर उसका रहा लक्ष्मी है? माता के साथ. गोलकीपिंग कर रहा है, दैट्स इट. कुछ नहीं, एकदम he's doing बाप very से good. नहीं निकाला है, जंप मार के. ये वो साला का भी जो था, वो he बाहर आ did रहा है. what a goalkeeper will do. He came, he went big, he didn't give him space. वो ही गया, he lost his focus. उसने बाहर ही मार दिया सीधा. He's doing what a good keeper should do. Proper position. Exactly. Good use of hands and feet. Coming out. Communication. If ball हवा में है, चिल्ला रहा है. Ball हवा में है. Onana used to be stuck. कि कोई ना वो डिफेंडर को चिल्ला के बोल रहा Onana है, हिलता "Away, नहीं I था am man. going for the ball." ओनाना और वीरेंद्र सहवाग सेम है, सीमेंट मार के आते थे पैर में, लेकिन बस अलग अलग क्रिकेटर That's same. No footwork. Man, so ये अच्छा था. Exactly. ये बहुत अच्छा था. At least Sehwag without the footwork, he used to hit those proper shots. 50 क्या Power और हाँ. उसका ये भी था. ये बंदा हिलता ही नहीं था. And now we've got a like. See, that's what I'm saying. Right? It's so weird कि one guy, one goalkeeper can make such a big difference. Because again, we don't have a midfielder yet. We still have that problem. But आदि, तूने जस्ट 5 मिनट पहले बोला कि वी रैन ओवर लाइक क्या मैकैलिस्टर. Szoboszlai and he Gravenberch. he was, बाकी तो दोनों को छोड़ दे, मैकैलिस्टर was one of their main players and he has been He's one of the best. huh? One of the best. He's one of the best. I hate to say it, but how good. और हम यूनाइटेड कौन, कैसेमिरो और ब्रूनो. भाई मतलब कोई सोच भी नहीं सकता. मैं वही बोल रहा हूँ, दिस गेम like the last two games, the way the players have showed up, I think this is what we spoke when we bought the players from EPL. This is what we were expecting when we said that Amorim is going to have training sessions and play one game a week. This is what we were expecting from each and every player, which they've showed in the last two games. Right? इसके पहले क्या हुआ मेरे को नहीं पता. Now we are actually bearing the fruits of buying players from EPL, like Cunha. It's just the confidence of a concrete goalkeeper. Yeah, See, in every game, right? We were losing by 1 goal, 2 goals because of one mistake Goalkeeper that happened somewhere. And we were Not down just swing. goalkeeper, not just goalkeeper. Bruno making a mistake at the wrong time, like he did yesterday. Yesterday. All of these items, right? Delayed making a mistake. Luke Shaw. Luke Shaw against going to City, sleep. horrible. So that one small mistake, right? That one split second, and we used to take a goal, and that confidence of scoring a goal not being there, Yeah. I think put a lot of pressure on the team. First, I think we scored in the first minute. That was one big booster for us. Yep. Second one, that now we have the confidence. We are getting more and more confidence at the back, right? That you know what, even if you make a mistake, it's not a guaranteed goal because there is somebody who's going to try his best to stop it at least. And Mario, such a good point. Just to both the games that we played well and we've done, both the games our team scored first. Even against Sunderland, even against Liverpool, that gives United the players who play is such big confidence, massive confidence in the team, And right? That they haven't considered the score. just adding on to that, I think like I don't know if I think people must have noticed कि like जो pressure Bruno पे था just to score, or like when we expect like कि oh we're goal down, Bruno will score, Bruno will save, वो shift हो रहा है. Mbumo has taken up. Cunha तो start भी नहीं हुआ है भाई. Sesko has just scored 2 goals. ये यहाँ से गोल मार रहा है. He's just taken it up. अमाद भी घुस रहा है, ये भी मार रहा है. वो जो पहले एक था कि इस पे आ जाता था रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है. लाइक एंटायरली शिफ्ट नहीं हुआ है, बट इट्स शिफ्टिंग. एंड आई लाइक दैट क्योंकि वी आर नॉट रिलाइंग ऑन दैट गाय. वी हैव रिलाइड ऑन हिम फॉर फकिंग seasons. Too long, far too long. Exactly. And now, day before yesterday, he did not have a good game, and yet we won 2-1. Yet we won. Even in a shit game, he gave that assist. वो तो देगा. See, you will always get one magic ball from Bruno per game. अब उस पे कौन मार रहा है गोल वो डिपेंड करता है. वो पहले मारता ही था, अब कम से कम बोएमो आके मारता ही. But Bruno deep position में will also make a lot of mistakes, which Mario just said. You know what? Now that we have a decent, good goalkeeper, he's yet to prove himself. Let's not get ahead of us. Yes, he's doing bare minimum. He's doing good. He's brought that confidence back between those two posts.
definitely between these two posts. But अभी back three के पास कुछ confidence है. But Bruno, in spite of making mistakes, yesterday, day before yesterday, we won against Liverpool away, and that's, I think, is the biggest thing that United can take away from this match apart from anything. Oh, On 100%. that note, we should end. It's